people lost their lives after an iron bridge collapse in the Pune district of Maharashtra, with 51 people being rescued after the bridge collapse. The NDRF teams were dispatched to conduct rescue operations at the spot. Tourists flocked the area, leading to the sudden collapse of the bridge, with some being swept away by the river. Following the alert, the local police as well as the villagers and the disaster response teams rushed to the spot and launched a rescue operation. Heavy rainfall over the past 2 days has caused significant rise in the water level of the Indrayani River. Rescue agencies are making every possible effort to save those who may have fallen into the river. 6 लोगों को आईसीयू में भर्ती किया गया है, 38 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और अभी भी कुछ वहाँ जो मलबा है उसके नीचे कुछ बॉडीज है। इसी यहाँ के लोकल्स की जो बात है उसे देखते हुए बड़ी क्रेन्स आई है और वो बड़ी क्रेन से विद जनरेटर सेट वगैरह लगा के हमने लाइट का ये इंतजाम किया है। डैम का पानी का रिसाव भी हमने डिस्चार्ज छोड़ना बंद किया है और जो बारिश का पानी वही है, तो अभी पुल को उठा के नीचे कोई बॉडी है क्या वो देखने का काम चालू है। Now, the Chief Minister has also taken stock of the situation and has assured that all efforts are being taken to rescue those who were injured. The NDRF teams have been deployed to rescue those who are stranded, and the Deputy Chief Minister, who is also the Pune's Guardian Minister, has spoken to the District Collector to seek a detailed report on what led to the tragedy. मावळमध्ये जो काही एक पूल तुटल्याची दुर्घटना झालेली आहे, आता मी विभागीय आयुक्त, तहसीलदार आणि पोलीस कमिशनर यांच्याशी बोललो आहे। आता प्राथमिक माहिती एवढीच आहे की हा पूल तुटलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही लोक जखमी झाले, त्या जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे आणि त्यासोबत काही लोक अडकलेले आहेत, त्यांच्याकरता एनडीआरएफची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता। काही लोक वाहून गेल्याची शक्यता आहे, अजून त्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालेलं नाही किंवा कॅज्युअल्टीजच्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालं नाही, त्यामुळे या क्षणाला त्याबद्दल बोलणं हे योग्य ठरणार नाही। पूर्ण माहिती याची मिळाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला माहिती देता येईल। आता प्रशासन तातडीनं सगळी मोबिलायझेशन करून आणि लोकांना कसा दिलासा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला आहे। मला कळवत आहे तिथे गेलेले आहेत, वेगवेगळी माहिती मिळते। एनडीआरएफची टीम तिथे गेलेली आहे, आजूबाजूचे नगरपालिका वगैरे तिथली पण टीम तिथे गेलेली आहे आणि प्रथम दर्शनी असं सांगण्यात येतं की तिथं जो ब्रिज होता लोखंडी तो फार चढलेला होता आणि त्याच्यातनं जास्त लोक तिथं उभे राहिले आणि मोटरसायकल पण जात होते, त्या बोजाने ते खाली पडला। तिथं 8 कोटीचा एक ब्रिज ऑलरेडी मंजूर आहे, पण त्याच्याबद्दलची उत्तमभूत सगळी माहिती नीटपणे कलेक्टरला द्यायला सांगितलेली। कलेक्टर म्हणले काही काळामध्ये तुम्हाला देईल। Now, Maharashtra's Minister for Water Resources and Disaster Management was also on the site, keeping a close watch on the rescue operations on ground. However, the minister put the onus on the tourists and claimed that about 250 to 300 tourists were on the bridge, despite warnings not to do so. He claimed that the iron bridge was designed only to support about 3 to 4 people at a time, but the tourists ignored the warning, the signboards, and climbed the bridge, which then led to the collapse. ये पगडंडी जैसा ब्रिज था, किसानों को आने जाने के लिए इस गांव से उस गांव में जाने के लिए ब्रिज था, लेकिन जो टूरिस्ट है बहुत भारी हो गए। मतलब 250-300 लोग एक जगह आके खड़े हो गए, जहाँ से 2, 4, 5, 10 लोगों ने जाना चाहिए वहाँ पे 250-300 लोग आके खड़े हो गए। पूरी मनाही करे, दोनों तरफ से बोर्ड लगाए गए थे, पुलिस ने पेपर में भी दिया था कि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, सभी का आगाज। यहाँ के लोकल लोगों ने भी बहुत अपोज किया, लेकिन यहाँ कोई मानता नहीं है, टूरिस्ट मानते नहीं है, झगड़े पे उतर आते हैं, और इसलिए हादसा हुआ। 300 लोग 250-300 लोग छोटे पगडंडी के ब्रिज पे आके खड़े हो गए और इसलिए इसका लोड इससे बेयर नहीं हुआ और ये ब्रिज बीच में से ही नीचे झुक गया और पानी में चले गया।
My colleague Richa is joining us from the spot where the unfortunate incident took place. Richa, what are the details amid the political blame game that is taking place? Any details emerging on what led to the tragedy? If this bridge was over 30 years old, was there no maintenance done? Because it raises questions on what led to this tragedy. Multiple tourists have lost their lives. What's the update on the rescue operations as well? Is it still ongoing? Well, the rescue operation is halted yesterday after it was getting darker. The NDRF stopped the rescue operation, and until the further notice, the rescue operation will not be continued. And as of now, what we are understanding is that the missing people have been found and they have been taken to the nearest hospital. Now, why the authorities are blaming tourists is, I'll tell you, this is the structure of the bridge, and this was made of iron only. The rest of the bridge's part is made of cement, but the particular part which is exactly above the river is only made of iron and was in dilapidated condition. Now, people, more than 100 people were standing on this bridge on one time, and which is why the authorities are telling that the bridge couldn't take the weight of the people, as well as there were bikes also present there. As we can see in the visuals, 4 to 5 bikes are still stuck in the debris of the bridge. Now the people were taken out of this structure, and 4 people who unfortunately lost their lives died on spot because of the weight, because of the intensity. They fell into the river, hit the rocks, and the structure of bridge collapsed on them. Now the reason why this bridge couldn't take the load of people was because of the negligence of government is also what should be highlighted in this situation. There are boards, warning signs put up in the nearby areas for people not to use this bridge. This was meant for only pedestrians, but bikes were also traveling from the same bridge. But despite the locals complaining again and again about the bridge's condition and were demanding new bridge, the authorities clearly ignored it, and the structure we can see what is remaining also is not in good condition. The cement structure has multiple cracks on the bridge. The police authorities are also scared to even step on the bridge at this point also. As of now, 4 people is what we are understanding have lost their lives, and 51 are still admitted to the nearby hospitals. But the flow of the river is so high. The rainfall alert was also issued in Pune's Ghat area. Today also there's orange alert in the Pune Ghat areas and entire Pune district. But the tourists continued with their travel plans, and it was a Sunday morning, Sunday afternoon. What they came to enjoy, they came here to enjoy the view, the monsoon day, and which turned out to be a very tragic day, and 2 people who lost their lives are from the same family, out of which one is a young boy, 6-year-old boy, who came here with his family and his father. Both lost their lives in the unfortunate incident. Now the government is blaming it on the tourists, that tourists shouldn't have used the bridge. So many people were gathering here at the same time, but it is also authorities' responsibility. The Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation as well as the local government should have alerted the people, and there should have been some restrictions. Police surveillance should also have been there if the bridge was in dilapidated condition, and if there are signboards not to use the bridge, why were people even allowed to be here? And so many people were present here at the same time, which has led to... Because if the bridge was not strong enough, or it was known that it has cracks, then why is it that there was no barricading there? Why were there no officials there stopping any tourists from going onto the bridge as well, isn't it? These are the questions that have been raised by the opposition as well, that says that it is the administration's negligence that led to the loss of lives. हमारे महाराष्ट्र के पुणे के पास तले गांव में जो इंद्राणी पुल के टूट जाने की वजह से कई लोग बह गए, 2 लोग तो मृत भी हो गए हैं, कई लोग अभी घायल
घायल हैं, कई लोग अभी बह गए हैं, बचाव कार्य चल रहा है, एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं, पुलिस लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन एक सवाल उठता है कि जब कोई ब्रिज जर्जर था और उसको बंद कर दिया गया था, तो वहां पर प्रशासन क्यों नहीं था? वहां बैरिकेटिंग क्यों नहीं थी? वहां पुलिसकर्मी क्यों नहीं थी? अरे हमारे देश में सुरक्षित क्या है? और उसके बाद भी वहां के सांसद, वहां के मंत्री कह रहे हैं कि वो ब्रिज जर्जर था, लोग जानबूझकर वहां जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, हम आपसे मांग करेंगे कि इसमें जो जो दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। देखिए, ये महाराष्ट्र का पुणे में जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है वो बैड न्यूज़ है। तो वहाँ पर जो रिलीफ वर्क वो ठीक ठाक होना चाहिए। तो एक्सीडेंट होता है, लेकिन भाजपा वालों ये एक्सीडेंट लेकर भी पॉलिटिक्स करता है। जब कलकत्ता में पोस्ता फ्लाईओवर टूट चुका था, तब वो बोले थे, नरेंद्र मोदी जी आकर बोले थे, एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो अभी ये महाराष्ट्र में ब्रिज गिर रहा है, गुजरात में वो नेग्लिजेंसी मेंटेनेंस का वो फ्लाइट गिर रहा है, तो सारे कई ऐसा सब हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी की अभी यही बोलेंगे, एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो बिल्कुल दुखद, मगर समस्या ये है कि गुजरात में जब मोरबी में पुल गिर गया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो लोग उसमें मरे उन्हीं को उसका दोषी बना दिया। तो इसकी पूरी संभावना है कि 1-2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्विटर पे जो लोग इसमें मरे हैं, घायल हुए हैं, उन्हीं को इसका दोषी बना देंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जवाबदेही सरकार की नहीं होती, जवाबदेही जनता की होती है। सिर्फ सत्ता की मलाई भारतीय जनता पार्टी की होती है। Thanking Richa for joining us with those reports and